kids, yesterday we read about the chapter 4 formatting in Microsoft Word. Yesterday we completed our half part of the chapter and now today we will read about the rest part of the chapter. So let's begin it. So our first topic of today's is setting margins. Margins refers to the amount of blank space between the edge of the page and the document text. Microsoft Word allows you to set the margins on all the four sides of a document: top, bottom, left and right. The default margins are set at 1 inch from top and bottom and 1 inch from the left and right edge of the page. It means मार्जिन हमारे पेज और हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के बीच के स्पेस को रेफर करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट के चारों साइड में मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट होता है जो कि टॉप एंड बॉटम पे 1 इंचेस एंड लेफ्ट एंड राइट पे 1 इंच से पेज के डिस्टेंस पे होता है। ओके, यू मे सी दिस मार्जिन्स इन योर फिगर 4.6 in your book. Our next topic is using ruler bars. Beta, ruler bar means scale. To change the left or right margins, point to a margin boundary on the horizontal ruler. When a pointer changes to a double-headed arrow, drag the margin boundary as per you need. मीन्स बेटा हमें अपने पेज के मार्जिन्स लेफ़्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए हमें हॉरिजेंटल रूलर का यूज़ करना पड़ता है। इस पे जैसे ही हम अपने माउस को पॉइंट करते हैं तो हमें एक डबल हेडेड एरो दिखाई देता है जिसे ड्रैग करके हम अपनी बाउंड्री को मार्जिन वाइज अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम वर्टिकल रूलर के साथ भी करते हैं जिसमें हम उस अपने मार्जिन को ड्रैग करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके, our next topic is using page layout tab. Here is the clip of using page layout tab. In this, first we select the page layout tab, then click on the margin option in the page setup group. A drop down list appears. The normal option is selected by default, यानी कि वो पहले से selected होता है. If we want to select the predefined margin or choice of our और अपने अकॉर्डिंग हम चूज़ करना चाहते हैं, देन सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन. द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. नाउ सेलेक्ट द मार्जिन टैब्स एंड टाइप द वैल्यूज दैट यू वांट टू डू इन योर डॉक्यूमेंट. इन द अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट, चूज एड द होल डॉक्यूमेंट और सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन एंड देन क्लिक ओके. ओके, नेक्स्ट इज सेटिंग पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन मतलब कि हमें पेज को किस तरीके से रखना है वो सेट करना है इसमें. द पेज ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी सेट द प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर इज सेट टू पोर्ट्रेट इन विच द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड लेंथवाइज. व्हेन वी चूज द लैंडस्केप ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट प्रिंटेड इज विड्थवाइज. सो पेज ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में हम अपने पेज के टेक्स्ट की प्रिंटिंग डायरेक्शन को चेंज सेट कर सकते हैं. हमारा जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट पे सेट होता है, इट मीन्स लेंथ वाइज सेट होता है. और अगर हम उसे लैंडस्केप पे चूज़ करेंगे तो वो विड्थ वाइज सेट हो जाएगा. हेयर इज़ द क्लिप टू चेंज पेपर ओरिएंटेशन विद द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स. First, select the page layout tab, then click on the orientation button in the page setup group. Now choose the landscape orientation from the drop down list and you can observe the change. Next is setting paper size. In Microsoft Word, you can work with different size of paper, so the available selection depend on the type of printer you use. It means Microsoft Word में हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पेपर के साइज़ को चूज़ कर सकते हैं. Here is a clip to set a paper size. Select the page layout tab, then click on the size button in the page setup group. A list of paper size options appear. The current paper size is highlighted in the drop down list you may see here. Select any desired page size option. The paper size of the document change accordingly. First, click on the More Paper Size option in the Size button drop-down list. The Page Setup dialog box will appear. Now, click on the Paper tab. Select the desired size from the Paper Size drop-down list. Observe the change in the preview block and then click OK.
Next is working with tabs. The most common way to indent the text is to use the tab key. It is used to move the cursor at specific spaces in a document. By default, tab stops are set at every zero point 0.5 inch. You can set the tab stops along the ruler according to your requirement. When you press the tab key, the cursor automatically jumps to the next tab. Tabs can also be created using leaders lines. The letters insert dots or dashes in the space leading up to the tab stop. बेटा इंटेंट मीन्स टू टेक डिस्टेंस, यानी कि जब हमें अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में डिस्टेंस देना है तब हम टैब की यूज़ करके उसको इंडेंट कर सकते हैं। हम टैब के स्टॉप्स को अपने रूलर के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रूलर से सेट कर सकते हैं। जैसे ही हम टैब की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पर यानी कि थोड़ी सी दूर चला जाता है। टैब्स को हम अपनी लीडर लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। हेयर इज़ अ क्लिप टू सेट द टैब स्टॉप by following the given step. First, click on the dialog box launcher button in the paragraph group of the page layout. The paragraph dialog box will appear as shown in image. Now click on the tabs button present on the lower left of the dialog box. The tabs dialog box appears on the screen. Type a tab position. For example, here I am typing 1.25 in the tab stop position. Text box, click on OK. Now press the tab key. The cursor will jump to the next position where you have to set the tab stop. OK. बेटा आपने देखा जैसे ही मैंने अपनी टैब पे 1.25 सेंटीमीटर का स्पेस सेट किया था एंड जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो वो 1.25 सेंटीमीटर के गैप से आगे बढ़ गया। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेंटिंग टेक्स्ट। बेटा मैंने अभी बताया इंडेंटिंग मीन्स डिस्टेंस को सेट करना। तो टेक्स्ट के एक एक वर्ड के बीच में और टेक्स्ट पैरा के बीच में कैसे डिस्टेंस सेट करते हैं, कैसे उसे इंडेंट करते हैं, वो हम इस हेडिंग पे लर्न करेंगे। इंडेंटेशन मीन्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड द पेज मार्जिन्स। इट मीन्स इंडेंटेशन हमारे टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच स्पेसिंग को डिटरमाइन करता है। इंडेंटिंग इज ऑल्सो यूज टू सेट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ड्रॉअर्स रीडर्स अटेंशन। इंडेंटिंग की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट के पर्टिकुलर सेक्शन को रीडर की चॉइस के अकॉर्डिंग और उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन फीचर इज़ यूज टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ टू ए स्पेसिफिक पोजीशन एदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। इंडेंटेशन फीचर की हेल्प से हम किसी भी पूरे पैराग्राफ को या फिर उसकी फर्स्ट लाइन को अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। Here is a clip to indenting text. First, select the text to be indented. Click on the Increase Indent button in the Paragraph button on the Home tab. The selected text shift half inch away from the left margin. Click on the Decrease button to move the text half inch closer to the left margin. Okay. I hope that everything that I show you in this lesson by the help of practicals and by the help of clip, it may help you to understand various things in this lesson. Try to do these exercises and practicals at your home and practice more. Thank you and have a good day.